Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a special video on Fortnight Current Affair, also known as FCA, where I'll be covering 10 most important news for the entire fortnight. This is Fortnight 2. Every month we release 2 fortnight, right? So the first fortnight is released on second Sunday and the second fortnight is released on fourth Sunday. So today's fourth Sunday, this is Fortnight 2 for the month of August. So before I start, just to tell you the coverage of the news that I have included in this session. The news include from the three sources, that is the Hindu, Indian Express and the PIB, right? So without any further delay, let's get started. So these are the list of the topics that I'll be discussing with you. 10 most important news for the entire fortnight. You can pause this video, you can read out the entire topic one by one. I'll be discussing each of news in detail accordingly. And before I proceed, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful for your examination purpose, do not forget to press a like button. So starting the session with the first news, that is DigiYatra Passengers Processing System. So this has been started in Delhi and many other cities in India, specifically Bengaluru. So recently, the Delhi International Airport Limited, run by GMR, they have announced the soft launch of Center's DigiYatra initiative that will be rolling a beta version of its app for the Android platform. So as of now, जो Android platforms के users हैं, उनको ये facility दी गई है. Very soon, this would be also available for iOS. Now, DigiYatra की अगर बात करें, how this is going to make the travel hassle-free and smooth. So the DigiYatra passenger processing system is based on the facial recognitions. So जो पूरी technology है वो facial recognitions पे काम करती है and that has been piloted in Delhi airport. DigiYatra envisages that जो travelers हैं that pass through a checkpoints, जो airport के जो checkpoints होते हैं उसमें paperless travel कर सके, they don't need to carry any boarding pass or such. The contactless processing the facial features to establish their identity. उनकी जो facial recognitions के through उस individual की verification हो जाएगी and boarding pass will be linked to this. How it will be done, I'll tell you that also. So this technology, the entry of the passengers that would be automatically processed based on the facial recognition, the system checkpoints including the entry of the airport, चाहे वो security checkup हो या फिर aircraft की boarding. Now, how the facility can be used, right? How the individual can avail this facility. To avail this facility, the passengers need to first download the DigiYatra app. आपको अपने फ़ोन में DigiYatra की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी. वैसे जो Android users हैं, for now, they are the only people who will benefited from this, right? Now, the users can register the app using the Aadhaar credentials followed by their Aadhaar. Basically, जो आधार के साथ वो सेल्फी लेकर के आधार कार्ड की क्रेडेंशियल और अपनी सेल्फी they can upload. वैक्सीनेशन की डिटेल भी उन्हें फिल करनी होंगी. सो द कोविड डिटेल क्रेडेंशियल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड पर्सन नीड टू स्कैन हीज और हर बोर्डिंग पास, जो उनको बोर्डिंग पास एलोकेट किए गए या फिर वो ई बोर्डिंग पास भी अपने इश्यूज करवा सकते हैं. विद दैट द बारकोड विल दीज ऑल थ्री डिटेल्स विल बी लिंक, राइट? तो ये इंकर लिंकेज होगी. उसके बाद द एयरपोर्ट पैसेंजर जो डेटा इकट्ठी होगी उस ऐप में विल बी सेंड टू द बोर्डिंग टीम, जो जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास आपकी डिटेल्स को शेयर किया जाएगा. And your facial recognition data will be available for that particular day on the travel, right? And it will help you to get a facial recognition done and you don't need any paperwork, anything, any sort of paper is not required, right? And a similar method will be applicable for all entry into the checkpoints. So this is how this facility is going to work. Objective क्या है DigiYatra की? First, it's aimed to digitalize the manual process and to bring the efficiencies, right? Enhancing the security standard and improving the current performance and achieving the better through existing infrastructure called digital framework. तो इंडिया में जो digital framework है उसे improve करने की कोशिश की जा रही है with DigiYatra. Enhancing the passengers experience and provide simple and easy experience to air travel. In many Western countries, these ideas have already been incorporated. और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में दिल्ली, Bengaluru, these are the airports that are operating with this. Cheetahs from Namibia set to reach India in December, basically in September. So September they are going to arrive. This is something very important step that government has taken to ensure that the population of cheetahs are stable in our country.
So recently, the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change have said that the translocation of cheetahs to Kuno National Park, which is there in Madhya Pradesh, this national park become important for many other competitive examination. मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ये, जहाँ पे इनको एक्यूमुलेट की जाएगी जो चीताज हैं इनको इसी सितंबर लाया जाएगा. The minister informed that the formalities with the Nambias have completed and cheetahs will be prepared for the translocations. Right before translocation, there are major health checkup that has to be done. तो उनकी process में भी थोड़ी time लगी and other documentation that is required. So Kuno National Park in Madhya Pradesh is expected to get 4 male and 4 female. They are expecting. और बाद में गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 12 और जो चीताज होंगे वो साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे. Something brief about Kuno Wildlife Sanctuary. This is located in the Vindhyas Hill of Central India, that is the Madhya Pradesh, established in 1981. Carter Fort Dry Deciduous Forest. This is again important for the prelims examination in UPSC. In 1990, it was selected as a possible site for implementation of Asiatic lion reintroduction project. Initially इसको इसके साथ स्टार्ट किया गया, बाद में गवर्नमेंट ने इसको चीता इंट्रोडक्शन साइट भी बनाया और गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने इसके स्टेटस को चेंज किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू कुनो नेशनल पार्क. सो नाउ इट हैज बिकम अ नेशनल पार्क विद एन एनलार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज. नाउ एमओयू साइन की गई है इंडिया और नाम्बिया के बीच में. सो बोथ कंट्री हैव साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता दैट हैज डिक्लेयर्ड इंस्टिंक्ट इन 1952. However, अगर नाम्बिया की अगर बात करें, cheetahs in Nambia as well in South Africa has already been prepared, including the vaccination. So as I've told you, there are some health checkup that has to be done before the cheetahs are translocated to India. So vaccination process check की जा रही है, including the other blood test, radio collaring. These are some of the essential that is required, right? The cheetahs in both countries will be identified with the 6 months ago, and none of them has been rejected. तो जो जितनी भी बेसिकली जो 8 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट करेगी उसके लिए सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली गई है और रिजेक्शंस कोई भी नहीं. India's first 3D printed cornea developed by scientists. This is again a milestone that has been achieved in India. So for the very first time, the researchers have successfully 3D printed the artificial cornea transplant into a rabbit eye, right? और इसको LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद इन्होंने मिलकर बनाया है विद सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. राइट दे हैव कोलैबोरेटेड फॉर द 3D प्रिंटिंग टू हैव अ ह्यूमन डोनर कोरोनियल टिश्यूज के लिए. तो ये नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट. द कॉर्नियल डैमेज इज लीडिंग टू द काउज ऑफ ब्लाइंडनेस. बेसिकली वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए 1.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको कोरोनियल ब्लाइंडनेस होती है हर एक साल, एंड दीज नंबर आर इंक्रीजिंग. Now this 3D printing cornea is composed to have a material deriving of the human cornea, which is a biocompatible, natural, free from any kind of animal residues. ये डेवलप की गई है indigenously. So this is something again a milestone because of the reason that all things that has been taken place were indigenously developed in India itself. The 3D printed on artificial cornea was developed indigenously through the government philanthropic funding, which is complete naturally, contain no synthetic component and free from any kind of animal residue and safe to use for the patients. Right? तो इसकी जो recent advancement है वो एक medical science में tissue engineering में काफ़ी बड़ी reform मानी जा रही है, which can also be used for the decellularized corneal tissue and stem cell derived from the human eye to develop a biometric hydrogel, जिसको जो भी पेंटिंग जो है पेटेंट अगर बात करें पेटेंट की वो पेंडिंग है इंडिया में, which will be used for the background for the 3D printing corneas, right? तो बायोमिमेटिक हाइड्रोजन ये इंडिया की अपनी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें पेटेंट पेंडिंग है. जब ये पेटेंट हो जाएगी then completely the right will be there with India, right? So this will help to get the materials for the 3D printing cornea. क्या advantages होंगे बायो इंक के? तो बायो इंक is used to make 3D printed cornea that have a side saving for the army personnel, ऐसे individuals जिनको खास करके वॉर के दौरान या किसी भी तरह की डिस्प्यूट अगर वॉर हो रही है या किसी भी तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में या आर्मी पर्सनल को अगर उनकी आइज़ में इंजरी हुई है तो ये वापस से रिप्लेस की जा सकती है विथ नो टर्सरी आई. जहाँ पे कई जगह पे टर्सरी आई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं उन पे ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी. द बायोमिकलिंग अप्रोच प्रोवाइडिंग एन ऑप्टिमाइज्ड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर स्टॉमरल रीजनरेशन while maintaining the curvature of thickness for bioprinted cornea to facilitate the surgical implantations, right?
So these are some of the major advantages of the bio-ink, especially for our army personnel. Now, credit guarantee plan expanded to aid hospitality. After all the sector that has revived, hospitality was a sector which was again not performing well. तो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटैलिटी को रिवाइव करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई. So the Union Cabinet, chaired by the Prime Minister, approved to enhance the limit for the emergency credit schemes, जिसमें 50,000 करोड़ रुपीस दी जाएंगे इन सेक्टर को रिवाइव करने के लिए. और ये 50,000 देने के बाद गवर्नमेंट ने अभी तक 5 लाख करोड़ रुपीस दे दिए हैं टोटल फॉर द इमरजेंसी क्रेडिट. बहुत सारे अलग सेक्टर्स में दी गई हैं. अभी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 50,000 करोड़ दिया गया. बाकी के जो 4.5 लाख करोड़ रुपीस है वो दूसरे सेक्टर्स में भी दिए गए, राइट. So additionally, the amount will be marked for exclusive for the hospitality, tourism and travel sectors, and the allotment has been linked for 4.5 lakh crore to 5 lakh crore rupees. Rationale क्या है इस decision के पीछे? The government aims that the amount of disruption that was there due to COVID-19 that has severely impacted the hospitality and related sector, they were performing negatively. So ये continuous schemes है. ECGLS की अगर बात करें, और सारे सेक्टर्स में भी 10 इंपॉर्टेंट ऐसे कोर सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए और उन पे इस स्कीम को लागू किया. उसमें हॉस्पिटैलिटी को भी इंक्लूड किया गया. 50,000 करोड़ स्पेसिफिकली दी गई हैं और इसे कंटिन्यू किया जाएगा 31 मार्च 2023 तक. द एनहांसमेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मच नीडेड रिलीफ टू द सेक्टर, जहाँ पे जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो लो कॉस्ट में लोगों को लोन या क्रेडिट दे पाए. This will enable the business enterprises to meet their operational liabilities and continue with the businesses. Now, India team deliberating on the Indian Ocean Pact, again something important for a country like India. So a delegation from India and other member countries of the UN have come together to deliberate one of its kind agreement to conserve the marine biodiversity, namely जिसको कहते हैं Indian Ocean में, that will be extended beyond the countries for the territorial water. अगर बात करें हाई सीज, दीज कंप्राइज ऑफ 45% ऑफ द अर्थ सरफेस. और जो इंडियन डेलीगेशंस के ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के, सेंटर फॉर मरीन फिशरीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आर पार्टी टू इट. नाउ इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज में मई में ये अप्रूवल मिली थी दैट द फाइनल सीरीज विल सेट इन मोशन सिंस 2018. बट ड्राफ्ट की अगर लीगल बाइंडिंग की बात करें तो और भी कुछ क्लॉजेज हैं जिनको पूरी करनी होती है, लाइक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ एंड सीज. तो इनकी वायलेशंस को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्ट किए हैं. बट ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज एंड स्पेसिफिकली इंडिया आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग ट्रीटी. की एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट की अगर बात करें, दिस इज डिसाइडिंग द राइट ऑफ द companies to undertake the exploration on the biological resources on the high seas, right? Typically focusing on the mining activities on the sea level for the gas, hydrate, precious metal and other fossil fuel resources. The agreement will focuses upon the company's absolute right to discover the extractions, right, from the region, and it will also looking into the intellectual property and the royalties of the UN prescribed bodies. Studies on sustainable utilization of deep and bioresources will be the main focus. तो ये कुछ की एस्पेक्ट्स है एग्रीमेंट के. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड इफ इट इज बीइंग आस्क्ड इन मेंस एग्जामिनेशन यू नीड टू हाईलाइट द की पॉइंट्स. एडवांटेजेस की अगर बात करें, विद द एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेवरल कंपनीज सी द पोटेंशियल in the exotic microbes that is on the deep sea could use for the drugs and vaccines. तो इस तरह के जो exotic microbes जो deep ocean में पाए जाते हैं वो vaccines और drugs manufacturing में भी मदद करते हैं. Recently the Union Cabinet has approved the Blue Economy Policy which has a program which a value around 4,000 crore rupees for the budget allocation for the next 5 years. Tomato flu outbreak in India after COVID-19, after monkeypox. This is the new flu that has been reported in India named as tomato flu. So according to the report of the Lancet Respiratory Journal, the new infection has been reported that is named as tomato flu or tomato fever that has been detected mostly in the young children in India who is less than 5 years old. इसको hand foot mouth disease के नाम से भी जाना जाता है, which has caused concern to the expert with the rapid number that is increasing in India. केसेस की अगर बात करें, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा में इसके अभी तक केसेस रिपोर्ट किए गए.
Now, about the tomato flu, which is hand, foot, and mouth disease, commonly known as tomato flu, is an infectious disease caused by the intestinal virus, mostly in children, right? तो virus की अगर बात करें, Coccidic virus A16 belongs to the enterovirus family, right? So these are some of the important points that you can take a note of. The illness is rare in adult. Adults में काफ़ी ज़्यादा rare है. ये children जो below 5 years की age है, उनमें ही ज़्यादातर देखी गई, right? So the most cases of the virus illness have symptomatic fever, painful sores, mouth rashes, blisters, and even some of the basically infection was also reported fevers are again the cause. So WHO ने कुछ recommendations भी दिए हैं और कुछ symptoms बताए हैं इस particular tomato flu को लेकर। ट्रीटमेंट की अगर बात करें, बेसिकली इट्स नॉट दैट इन्फेक्शियस, जितनी वायरल इन्फेक्शन होती है उतनी इन्फेक्शियस नहीं है, बट अगेन टच क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से ही फैल सकती है। बट इसकी अगर बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो जो चिकनगुनिया और डेंगू में जो वैक्सीनेशन चलती है वो सेम ही इसमें अलाउड की जाएंगी। आइसोलेशन इज मैंडेटरी, रेस्ट इज अगेन मैंडेटरी, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, हॉट वाटर, स्पॉन्जेस एंड रिलीफ फॉर द रैशेस, राइट। सपोर्टिव थेरेपी ऑफ पैरासीटामोल फॉर द फीवर्स इज रिक्वायर्ड। बॉडी एक के लिए ये सारी चीज़ें दवाएं दी जाती। यंग चिल्ड्रन आर प्रोन टू द इन्फेक्शन थ्रू द यूज ऑफ nappies touching unclean surface and putting their things into the mouth. तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, they tend to have their hand in the mouth, और कई ऐसे infectious चीज़ों को छू करके वो वापस जब माउथ को टच करते हैं तो वायरस जो फ्लू है वो उनके अंदर बॉडी में चली जाती है। Cases reported in India, although this is non-life threatening, the first cases were reported from कोलम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। उसके बाद 82 चिल्ड्रंस जो है उन्होंने रिपोर्ट किया केरला गवर्नमेंट को कि द केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। फर्दर द एंडेमिक वायरल ट्रिगर द अलर्ट इन तमिलनाडु एंड केरला। द केसेस वर अदर रिपोर्टेड फ्रॉम 2 and फर्स्ट इट वाज केरला, देन फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड कर्नाटका। और अभी उड़ीसा में ऑलमोस्ट 26 ऐसे बच्चे जिनको इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड पाए गए। इंडिया ईरान साइन पैक्ट टू एड द मूवमेंट ऑफ seafarers. So recently India and Iran has signed a memorandum of understanding जहाँ पे वो म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करेंगे कॉम्पिटेंसी फॉर द अनलिमिटेड सीफेरर्स द बोथ कंट्रीज, और एक सर्टिफिकेशंस दी जाएगी जहाँ पे बेसिकली इनको आराम से जो लॉज है, जो ट्रेड खास करके बात करें उस रूट की इंटरनेशनल कन्वेंशन में, दे विल बी गेटिंग समथिंग काइंड ऑफ पास दैट विल बी allowing them to move free in the region. So the MOU is aimed to smoothing the movement of the seafarers for the both countries. तो seafarers agreement की अगर बात करें, along with the handover of the 6 mobile harbor cans, the port authorities, this is the first tangible development that has taken place in the year of dormancy owing the unfed port after the COVID-19 restrictions. So after the revival, the India and Iran is coming up with the seafarer agreement, which is going to help many of the stakeholders who are related to this. सिग्निफिकेंस ऑफ चाबहार पोर्ट आपके लिए जानना ज़रूरी है, बिकॉज ये जो डेवलपमेंट है चाबहार पोर्ट के आसपास है। और ईरान की अगर बात करें, इंडिया और ईरान में, तो चाबहार पोर्ट की इशू काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, राइट। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द गेटवे फॉर ट्रेड बिटवीन द सेंट्रल एशियन यूरोपियन नेशंस, राइट, एंड इट इज़ डेवलप्ड विद इंडियाज असिस्टेंस करेंटली ऑपरेटेड बाय द state owned, that is India's Ports Global, and India highlight the role of Chabahar Port as India's trade multiplier. A development of Chabahar Port will lead to increase in the trade shipment and the volume, right? And in India, India supplied almost 75,000 ton of wheat to Afghanistan through this route. Humanitarian assistance के लिए भी 40,000 लीटर मैलिथिन, 96% of ULP pesticides, ये सारी चीज़ों को चाबहार पोर्ट के थ्रू, जो कि इम्पोर्टेंट रूट मानी जाती है, उसके थ्रू अफगानिस्तान भेजा गया। Annual SCO Defense Minister Meeting. So recently, while addressing the SCO Defense Minister Meeting, जो कि ताशकंद यूज़बेकिस्तान में हुई है, ये वेन्यू आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So the Union Defense Minister asserted that the terrorism in any form, including the cross-border terrorism, is terrorism against the humanity or is a crime against the humanity. तो इंडिया ने अपनी बातों को दोहराते हुए कहा है that the fight in form of terrorism to make a regional peace secure and stable region, right? In this context, इंडिया ने एक वर्कशॉप की भी बात कही है, जहाँ पे इस वर्कशॉप की थीम रखी गई है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, रिस्क मिटिगेशंस, डिस्क जो डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है एससीओ मेंबर्स के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। एंड इंडिया इज बेसिकली शोइंग इट्स प्रोएक्टिव रोल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बेसिकली जो खास करके टेररिज्म की बातें हैं, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन वोकल अबाउट दिस पार्ट। तो एससीओ के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंडिया क्लियर करना चाहती है कि किसी भी फॉर्म के टेररिज्म को
माना नहीं जाएगा, and any kind of terrorism in any form is a crime against humanity. इंडिया की क्या स्टैंड थे अफगानिस्तान को लेकर के? द डिफेंस मिनिस्टर हैज वॉइस्ड द सपोर्ट टू द पीसफुल, सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान. तालिबान के आने के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट ने, तालिबान की गवर्नमेंट, उसके बाद इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट फाइनली द अदर डिप्लोमेटिक प्रोसेस स्टार्टेड. इंडिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ स्टार्ट कर दी है. So he urged the parties to encourage the Afghanistan authorities to achieve the national reconciliation through dialogue and negotiation. This is the only way out in the diplomacy, right? And he underlined that the United Nations Security Council should give a resolution in this regard. And the defense minister has urged that the urgent humanitarian assistance is required for the people of Afghanistan, जिनकी safeguard और उनके fundamental right को uphold करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी. Now, India, Bangladesh to discuss the water sharing treaties. Recently, India and Bangladesh have finalized the memorandum of understanding for the interim water sharing from the Kushiara River. This again important. आप इसके जो मैप पर रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़रूर देख लें. This can be relevant for your examination. 38 मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, जहाँ पे जॉइंट रिवर कमीशंस की जो मीटिंग है दिल्ली में हुई है, और इन्होंने इंपॉर्टेंट वाटर रिलेटेड जो ट्रीटीज़ हैं, खास करके तीस्ता और गंगा रिवर पे, उनके बारे में बातें की. And this is the meeting after a gap of 12 years. 12 साल के गैप के बाद ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है. So this is going to be very significant for both India and Bangladesh. Both sides has welcomed the finalizations of the design localization water intake on the Feni River to meet the drinking water from the Shorbum town of Tripura, right? और इंडिया एंड बांग्लादेश ने 54 रिवर साथ में शेयर करते हैं. ये दोनों कंट्रीज 54 रिवर्स हैं जो साथ में शेयर करते हैं, बट अभी जो एग्रीमेंट हुई है उन पे 7 रिवर पे ज़्यादा फोकस की गई, right? And has been agreed that it will widen the ongoing cooperation with the 8 members for the data exchange. The matter will further discuss the technical level of the Joint River Commission. तो JRC के बारे में थोड़ा brief आप समझ लें. The Joint River Commission of India and Bangladesh was constituted in 1972, जहाँ पे bilateral mechanism के थ्रू इसे बनाया गया था. And mutual interest जो इंडिया और बांग्लादेश के जो border के issues हैं, जो transboundary rivers हैं, उनको discuss किया गया. One of the important areas of cooperation were being the assist Bangladesh sharing the real-time flood data. Now, India has recently extended the period of flood sharing beyond the 15th October to help address the unforeseen flood events. तो अगर flood events की बात करें बांग्लादेश में, इंडिया ने हमेशा असिस्टेंस दी है फ्लड की जो डेटा शेयरिंग उसको लेकर के, और आगे भी देती रहेगी till 15 of October. So, Bangladesh is indirectly also getting benefited from this initiative of India. Now, India envisages free and open Indo-Pacific, where India was always proactive in this region because of the dominance of China. तो China की जो huge dominance देखी गई है, इसी को लेकर के Quad की भी formation की गई. So let's understand what India has pitched for. So recently, while delivering the lectures on India vision on the Indo-Pacific, तो यहाँ बताया गया जो external affairs minister थे on the Chulalongkorn University, उन्होंने address किया. He said that the open, free and inclusive Indo-Pacific is very important, and the minister said that the Quad is the most prominent plural platform that will address the contemporary challenges and opportunities in the Indo-Pacific. While addressing the Quad grouping, China's foreign minister has repeatedly opposed the US-led Quad grouping. तो China ने कभी भी इस तरह की grouping को appreciate नहीं किया है, and China has always alleged that these grouping is not going to help, and China continue to have the dominance in the region. Quad की अगर बात करें, Quad members स्टार्ट की गई 2017 में. 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं विच इंक्लूड इंडिया के अलावे US, जापान और ऑस्ट्रेलिया. तो ये सारे 4 कंट्रीज हैं जो मिलकर Quad बनाते हैं. एंड द मेंबर्स हैव द फोकस अपॉन 4 इंपॉर्टेंट एरियाज विच इंक्लूड maritime security, safety, humanitarian assistance and disaster relief, cyber security, critical emergencies technology. उसके अलावे connecting the education, health and even the space corporations. कॉल फॉर फ्री इंडो पैसिफिक, बेसिकली इंडिया और यूएस ने बहुत सारी ऐसे मल्टीलैटरल फोरम पे बातें कही हैं कि इंडो पैसिफिक फ्री होना चाहिए, ओपन होनी चाहिए और थ्राइविंग होनी चाहिए, सो दैट जो राइजिंग डोमिनेंस है चाइना के मिलिट्री की वो कम की जा सके. एंड चाइना क्लेम दैट ऑल डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी इन द ताइवान एंड फिलीपींस, ब्रुनाई, मलेशिया एंड वियतनाम क्लेम्स टू बी द पार्ट ऑफ इट. तो हर एक कंट्रीज ने साउथ चाइना सी के जो पार्शियल आइलैंड है उन पे भी क्लेम करने की बात की है. सो दीज आर अगेन द डिस्प्यूटेड वन. आप इसके मैप पर जरूर देख लें, मैप से रिलेटेड जो भी चीज़ें. China has built the artificial island in the military installations in the South China Sea, and China has also the territorial dispute with Japan in the East China Sea. So disputed है
और जो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ चाइना की डिस्प्यूट। द पोटेंशियल ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, किस तरह से इंडो पैसिफिक एक पोटेंशियल है पूरे रीजन में। So Indo-Pacific has increased the seamless space where almost close to 64% of the global population is there, or 60% of world GDP है. About half of the global trade happens through the maritime route through this. And over the years, this region has been a strong and sustained economic growth spread in the Pacific ring, South Asia Gulf, and ईस्टर्न एंड साउथर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रीजन है। इंडो पैसिफिक एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि PSIR के जो ऑप्शनल के बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, राइट। सो दोज ऑफ यू हैव PSIR एज एन ऑप्शन, उनके लिए भी इंडो पैसिफिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस पे जनरल स्टडीज पेपर 2 में आप इस पे सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। So this was all about for the FCA for the August 2. We have a lot more other initiatives for you like daily news and editorial analysis which I covered from the Hindu and Indian Express. आप हमारे IASGYAN की monthly magazines at the end of the month download कर पाएंगे। FCA है, PIB है, monthly policy review, gist of Yojana and Kurukshetra. This all initiative will help you to sail through the journey of civil services. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.